Assalamu alaikum. My name is Sana Malik and today we are going to discuss lecture number 9 of chapter 14, which is D and F block elements from HSSC-II. Now we are going to discuss about copper. Copper is a brown red metallic element and is one of the most widely used metal. So first of all, we are going to discuss the various oxidation state of the copper. So copper exists in two oxidation state. One is the +1 oxidation state and the other one is the copper +2 oxidation state. Most of the copper compounds are usually colorless and diamagnetic, as 3d orbital is completely filled, which shows the 3d10 configuration. Or most of the anhydrous cupric compounds are colorless, while the hydrated cupric compounds are blue due to the formation of hydrated ion. Solutions of the copper salts are acidic in nature due to hydrolysis. So copper 2 positive when reacts with the water to form CuOH whole positive plus H positive. And since the outermost shell of the copper 2 positive has one unpaired electron which has the D9 configuration, copper 2 positive compounds are paramagnetic. तो बेसिकली हमारे पास होता ये है कि जो कॉपर है, जो +1 कॉपर है, उसमें हमारे पास ऑटोमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 होगी और हमारे पास ये डायामैग्नेटिक होगा। लेकिन जो +2 है, उसमें हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 3d9 कॉन्फ़िगरेशन d9 कॉन्फ़िगरेशन बच जाती है। इसका रीज़न ये है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट हो रहे हैं वो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल से और एक इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल से एलिमिनेट होता है। एज अ रिज़ल्ट हमारे पास D9 कॉन्फ़िगरेशन है और क्यूप्रस आयन जो है Cu2 पॉजिटिव आयन वो पैरामैग्नेटिक होगा। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो हैं विच आर रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारे पास Cu+1 इट इज़ रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, whereas Cu+2 it is attracted by magnetic field. Then we have the reaction of copper with the hydroxide ion. So hydroxide ions from a base such as sodium hydroxide remove the hydrogen ions from the water ligands attached to the copper ion complex to form blue precipitates of tetra aqua dihydroxo copper complex is formed. So basically हमारे पास हेक्सा एक्वा कॉपर 2 पॉजिटिव जो है, जब हम उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ऐड करेंगे तो हमारे पास टेट्रा एक्वा हाइड्रोक्सो कॉपर हमारे पास बनेगा और इसके precipitates हमारे पास बन जाएंगे. Then we have the reaction of hexa-aqua copper ions with the ammonia solution. We have seen that ammonia acts as a base as well as ammonia acts as a ligand. With a few drops of the aqueous ammonia is added to the hexa-aqua iron, hydrogen ions of the water ligand is removed by the ammonia and blue precipitate of the hydroxide of the copper is formed. In this reaction ammonia acts as a base proton एक्सेप्टर, तो ये हमारे पास वाटर के प्रोटॉन को रिमूव करता है और एज अ रिज़ल्ट हमारे पास अमोनियम आइंस बनाएगा। और यहाँ पे हमारे पास जो हेक्सा एक्वा कॉपर था, इसका सोल्यूशन जब चेंज हो जाएगा, जब हमारे पास जो है टेट्रा हाइड्रोक्सो और हमारे पास टेट्रा एक्वा डाईहाइड्रोक्सो कॉपर बनेगा और इसके ब्लू पेपटीज बनेंगे. Then we have ammonia as a ligand. When excess of ammonia solution is added to the hexa-aqua copper, the precipitate dissolves and deep solution of tetraamine copper ion is formed. In this reaction, ammonia acts as a ligand. अब हेक्सा एक्वा कॉपर में से हम जब अमोनिया एक्सेस में ऐड करें तो हमारे पास वाटर लिगेंड जो है वो हमारे पास रिमूव हो जाते हैं और अमोनियम आयन जो है वो आके सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे और एज अ रिज़ल्ट हमारे पास डीप ब्लू कलरेशन या सोल्यूशन बन जाएगा जो इंडिकेट करेगा कि अमोनिया हेयर इज प्रेजेंट एज अ लिगेंड. Then we have the reaction of hexa-aqua copper ions with the carbonate ions. So hexa-aqua copper जो है वो हमारे पास reaction करेगी. When the carbonate ion is added to the copper 2 ion, the blue precipitates of the copper 2 carbonate is formed. तो hexa-aqua copper जो है इसकी blue coloration है जो हमारे पास change होके blue PPTs बना देगी. Now we have quick quiz number 8. So here ammonia acts as a base as well as a ligand. Prove the above statement by the reaction with copper ion. So copper ions exist as hexa-aqua complex in water. When a small amount of the ammonia hydrogen ions are pulled off from the hexa-aqua ion to give the same neutral complex, this is insoluble and precipitates are formed. Here ammonia is acting as a base. So hexa-aqua copper
reacts with ammonia and it forms a complex which is टेट्रा एक्वा डाइहाइड्रोक्सो कॉपर और इस केस में अमोनिया जो है वो हमारे पास ऐड कर रहा है एज अ बेस और यहाँ पे ब्लू हमारे पास कलरेशन होगी और उसके बाद हम जब एक्सेस ऑफ अमोनिया डालते हैं तो एक्सेस अमोनिया जो है वाटर को रिमूव करता है और एज अ रिजल्ट हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वहाँ पे अमोनिया एक्ट्स एज अ लिगेंड. Then what happens is that when copper ions react with the carbonate ions, what you expect and what color of the precipitate is formed. So basically what happens is that copper 2 positive ions react with the carbonate ions to form cuprous carbonate. This reaction is used as a test for the copper 2 ions and blue precipitates of copper carbonate are formed. That's all for today's lecture. Thank you.